Hello everyone, welcome to the political science tutorial. This is the one place to learn everything about political science. This channel will help you all with all the concepts of political science as well as theories in both English and Hindi. So spread a word regarding this channel. Hello and welcome to this new tutorial. This is the fourth part of the company rule which we were discussing about as a part of the historical background of Constituent Assembly. And before this we have talked about Regulating Act of 1773, followed by Pitt's India Act of 1784, and then we spoke about Charter Act of 1833. And this is the last part of understanding the company rule, which began from 1773 and ended in 1858. And to that series, this is the fourth part, Charter Act of 1853. आप सबका स्वागत है इस नई ट्यूटोरियल में। ये चौथा पार्ट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल का, और इसके पहले मैंने 3 पार्ट कवर किए हैं और इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एज वेल एज it will be put up on the I button on top. So let us begin and start understanding the last part, the last Charter Act of 1853, under which company ruled in India for a long time before they hand over their power to British government after 1857 revolt. So before 1857 revolt, this Charter of 1853 is very important, and therefore this was the last of the series of the Charter Acts passed by the British Parliament between 1793 and 1853. So following are the significant importance of this charter, and this is very important when it comes to understanding the constitutional aspects of India, and therefore this Charter Act of 1853 was a significant constitutional landmark. So let us begin with the first feature. Well, it separated for the first time the legislative and executive functions of the Governor General Councils, and it provided for addition of 6 new members which are called legislative councillors to the council. Well, in other words, we need to remember that it established a separate Governor General Legislative Council which came to be known as the Indian Legislative Council or Central Legislative Council. Now this legislative wing of the council will function as mini parliament, which basically adopting the same procedure as the British Parliament, and thus legislation for the first time was treated as a special functions of the government which required special machinery and special processes. Well, so when we talk about the first feature, that under this Charter of 1853 for the first time they separated both the functions of the Governor General Council, that is legislative functions and executive functions. And for the first time they realized that legislative function is very important when it comes to governing the entire state and when it comes to understanding the legislative procedure, and therefore it established separate Governor General Legislative Council. So just to take care of these legislative matters, they set up a new legislative council which actually known as Indian Legislative Council, or which is also be known as Central Legislative Council. And this Indian Legislative Council or Central Legislative Council will function exactly like a mini parliament what they have it in British Parliament. So this was basically a copy paste job that they introduced parliamentary setup or parliamentary system in India at the company's fag end. Company never knew that they will be facing a revolt very soon, but before that they introduced this sort of a setup, and in fact this setup eventually helped India in the long run to have a parliamentary system in India. And therefore
from that perspective, Charter Act of 1853 is very very important, which actually laid down the foundation of parliamentary system in India. Although Indians were not part of it in those days, but that actually gave a passage, gave an opening of starting a new system in India, that is parliamentary system. And therefore they for the first time divided, or rather separated, the legislative and executive functions of the Governor General Council, so that now they have legislative work to be done as well as executive job. सबसे पहला जो फीचर आता है इस चार्टर का, चार्टर ऑफ 1853 का, कि इस चार्टर के तहत उन्होंने पहली बार जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो अधिकार थे उनको सेपरेट किया। उन्होंने पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट करते हुए एक इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की नींव रखी। इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है, या फिर इस नाम से भी वो जाना जाता है। और इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत ये जो इंडियन काउंसिल रहेगा, दिस लेजिस्लेटिव विंग, जो ये विंग जो रहेगा वो एग्जैक्टली मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करेगा। जिस तरह से इंग्लैंड में उनका खुद का पार्लियामेंट है, उसी तरह का एक पार्लियामेंट यहाँ पर भी उन्होंने शुरू किया, लेकिन इसकी जो तादाद रहेगी वो छोटी रहेगी, इसीलिए उसको मिनी पार्लियामेंट भी कहा जाएगा। और ये मिनी पार्लियामेंट बेसिकली वुड बी अ रेप्लिका, मतलब कॉपी पेस्ट जैसा रहेगा। उसके कुछ अपने अधिकार रहेंगे, उसके कुछ अपने फंक्शंस रहेंगे, और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शंस रहेगा वो रहेगा लेजिस्लेटिव एरिया में, मतलब उनको अभी कानून यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। और इसी के चलते हुए ये जो चार्टर है और ये जो फीचर है, ये आगे जाके भारत को जब हम आज़ाद हुए तो हमें पार्लियामेंट बनाने में बहुत महत्वपूर्ण उसने योगदान दिया है। इनफैक्ट this is considered to be a founding stone of introducing parliamentary setup in India। तो ब्रिटिश सरकार ने और या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस चार्टर के तहत ये नई व्यवस्था भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। और इस व्यवस्था के नीचे उन्होंने पहली बार गवर्नर जनरल काउंसिल का जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन रहेगा उसको सेपरेट किया। और इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत उन्होंने 6 नए मेंबर्स को भी इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किया। और इसी के चलते हुए ये लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम से भी जाना जाता है, या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है। और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जैक्टली मिनी पार्लियामेंट की तरह ऑपरेट करेगा या फिर काम करेगा, एंड दे विल फॉलो ऑल द प्रोसीजर्स एज ब्रिटिश पार्लियामेंट हैव फॉलोड इट। सो देयरफॉर दिस इज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, wherein they separated the legislative and executive functions of the Governor General of Council, and this legislative wing of the council will function exactly like a mini parliament like we have in England, and it provided additional 6 new members, and these 6 new members will be called as legislative councillor of the council. So this is the first feature under Charter Act of 1853. Now moving on to the second very important feature, that it introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants, and thus this opened an opportunity for many Indians to join civil services. Now this is very simple point, that finally under Charter Act of 1853 they opened that section of civil servants to Indians, because before this Indians were not allowed to be part of the British East India Company, nor they were allowed to be a civil servant of the British East India Company या फिर British rule in India. And with this act they finally allowed and opened the competition so that Indian can also take up the jobs, can participate and can be recruited and can be taken up the civil servants in British East India Company. So सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस चार्टर के
अनुसार अभी उन्होंने इंडियंस के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पहले क्या होता था कि इंडियंस को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश सरकार में काम करने की अनुमति नहीं थी, दैट टू एट द लेवल ऑफ सिविल सर्वेंट्स। और इस चार्टर के तहत उन्होंने अभी उनके दरवाजे खुले कर दिए भारतीयों के लिए, ताकि इंडियंस भी कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे और वो भी एक सिविल सर्वेंट का जॉब ले सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मूव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मूविंग ऑन टू द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, that it extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust of the British Crown. But it did not specify any particular period. This was clear indication that the company rule could be terminated at any time by the Parliament. Now this is the third very important feature of Charter Act of 1853, that the company was given free hand. It extended in fact the company rule and allowed the company to possess all the Indian territory on behalf of the British Crown. Only as and when British Crown Trust Company, they will hold and they will possess all the Indian territory. Now we also have to remember that under this feature, under this charter, they have not specified any period that how long company will hold the territory in India. That means at given time, if Parliament pass any law which terminate the holdings of the British East India Company, then they will lose that holding, and British government directly will take over all the territory. But as of now, under this charter, they extended the company's rule and they allowed, in fact they gave free hand to the East India Company to retain and possess all the Indian territory only on trust that the crown, the British crown, have trust, have faith on British East India Company. तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट है अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1853, कि इस चार्टर के तहत उन्होंने कंपनी को एक फ्री आज़ादी दे दी, एक कंपनी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, उसको एक फ्री हैंड दे दिया। और इस चार्टर के अनुसार कंपनी को जो सारी जो इंडियन टेरिटरीज़ थे उस टाइम पे, जो भी टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के तहत आती थी, वो सारी टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के हाथों दे दी गई। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई उसका स्पेसिफिक टाइम नहीं था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये टेरिटरी इतने साल के लिए अपने अंदर रखेगा, वो कोई लिखा नहीं है, वो कोई स्पेसिफाई नहीं किया है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आगे चलते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो टेरिटरी कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं होती है या फिर वो मैनेज नहीं कर पाती है, उस टाइम पर ब्रिटिश पार्लियामेंट विल पास अ लॉ एंड विल टेक ओवर ऑल दोज टेरिटरीज फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पे या ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे वो सारी टेरिटरीज अपने कब्जे में लेगी, अपने अंडर उसको रखेगी और गवर्न करेगी। Now this is another very important feature, that it extended the company's rule and allowed it to retain the possession of Indian territory on trust for the British government. Moving on to the fourth point and the last very important point of Charter Act of 1853, that it introduced for the first time local representatives in Indian Central Legislative Council. Of the 6 new legislative members of the Governor General Council, 4 members were appointed by local provincial governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. Now this is a very important move, in fact, under this charter of 1853, that for the first time British government decided to introduce a local representative in Indian Central Legislative Council. It's the same Indian Central Legislative Council which was supposed to act like a mini parliament.
So they allow finally to have 4 local representative, and out of these 6 members which they actually were supposed to be comprising this Indian Legislative Council, out of the 6, 4 members were appointed by the local government, and that local government were basically representing Madras, Bombay, Bengal and Agra. And this feature somehow opened a space for an Indian to be the part of this Indian Central Legislative Council. चौथा और अंत में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ब्रिटिश सरकार ने ये इंडियन काउंसिल की नींव रखी थी, तब उस चार्टर में उन्होंने ये भी बात रखी थी कि जो 6 लोग इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, उस 6 मेंबरान में से 4 मेंबरान लोकल लेवल के रहेंगे, मतलब लोकल रिप्रेजेंटेटिव उसमें रहेंगे। और ये 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली मद्रास प्रेसिडेंसी से आएंगे, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे और आगरा से आएंगे। तो इसके चलते हुए पहली बार किसी लोकल को इस व्यवस्था में एक जगह मिल रही है, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें आगे देखना है। क्योंकि ये जो सिस्टम ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया फाइनली, भले वो पेपर के ऊपर हो या भले वो छोटे नंबर में हो या सिर्फ एक नाम के लिए हो, लेकिन ये आगे चलते हुए एक नीलम का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इसके तहत हमारे देश में पहली बार एक पार्लियामेंट्री सेटअप को इंट्रोड्यूस किया गया, और इसीलिए लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और इसी के चलते हुए भारत में एक डेमोक्रेसी का आना अभी तय हो चुका है। अगेन इट विल बी टू अर्ली टू से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि ये डेमोक्रेसी कैसी रहेगी, क्या लोगों को बहुत अधिकार मिलेंगे या फिर कुछ गिने चुने लोगों को ही अधिकार मिलेंगे। ये हमें आगे जाके पता लगेगा कि इसके बाद जब कंपनी रूल ख़त्म होता है यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद 1857 रिवोल्ट हुआ, और 1857 रिवोल्ट के बाद बरतानिया सरकार ने या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू होल्ड इंडिया, एंड देयरफॉर द पावर हैज़ टू बी ट्रांसफर टू द क्वीन। और उसके बाद क्या क्या चेंजेस निकल के आगे आई, ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पर्सपेक्टिव से। और इसीलिए ये चार्टर बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट रखता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को समझने के लिए। और यहाँ पर ख़त्म होता है कंपनी रूल। लेट मी जस्ट गिव यू स्मॉल रिकैप कि कंपनी रूल के तहत 4 इम्पोर्टेंट एक्ट को ब्रिटिश सरकार ने इंट्रोड्यूस किया, और इस 4 एक्ट के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ अपने अधिकार दे दिए, एंड दीज वे बेसिकली अ गाइडलाइन और अ डायरेक्शन इन अ वे टू हेल्प ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू रूल इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। और वो 4 बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट जिनको आगे लाया गया वो थे, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, उसके बाद पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और ये अंत में चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो दीज 4 एक्ट्स basically have helped us to understand how actually company ruled in India from 1773 to 1858। और यहाँ पर कंपनी रूल ख़त्म होता है, और आने वाले ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे द क्राउन रूल विच बिगेन फ्रॉम 1858 and finally ended in 1947. So I hope you have understood the historical background with special focus on company rule in understanding how the foundation of
Constituent Assembly of India was laid down. So I hope I'm clear with this part of the tutorial. I'll see you soon in next tutorial. Till then, take care.